3 sine within bracket alpha plus beta is equal to 2 sine within bracket alpha minus beta. Cos A sine B and sine A minus B cos A sine B. On the basis of this identity, sine alpha cos beta plus cos alpha and sine beta, and it is equal to 2 within bracket sine alpha minus beta, that is sine alpha cos beta minus cos alpha and sine beta. Is it clear? ठीक है. Now it will be 3 sine alpha cos beta plus 3 cos alpha sine beta equal to 2 sine alpha cos beta and minus 2 cos alpha sine beta. Is it clear? ठीक है. Now 3 sin alpha cos beta and minus 2 sin alpha cos beta, इसको अगर आप यहां शिफ्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी sin alpha cos beta and on right hand side minus 2 cos alpha sin beta, and when it shifted to the right hand side it will be like minus 3 cos alpha and sin beta, right? So what we will have, sin alpha cos beta is equal to minus 2 minus 3 minus 5 cos alpha sin beta, right? अब देखो cos alpha को यहां शिफ्ट कर दो तो sin alpha by cos alpha क्या हो जाएगा? tan alpha इक्वल टू माइनस 5 एंड cos बीटा को यहां शिफ्ट कर दो तो sin बीटा बाय cos बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन था tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा. एज पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दैट tan अल्फा is equal to k tan beta, then what will be the value of k? So we can say that k is equal to minus 5. K is equal to minus 5. So the value of k will be minus 5, and this is the final answer of this question. For the complete analysis of this lecture, click the link given on the screen. Thank you.